हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 8 का माई इंग्लिश बुक 8 1.1 बी द बेस्ट इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्कशॉप देखो, रीड द वर्ड और नेम्स गिवन बिलो, पुट द बिग साइज बिगर वंस इन द बिग सर्कल एंड द स्मॉलर वन इन द स्मॉल सर्कल। जिनकी साइज बिग है उनको बिगर सर्कल में प्लेस कर लेना है और जो स्मॉल साइज वाले हैं उनको स्मॉल सर्कल में प्लेस कर लेना है। तो स्मॉल साइज में बास, बश, स्क्रब, रील, स्टार, ट्रेल। बिगर साइज में मस्की, ट्री, पाइन, लेक, हाईवे, सन। क्वेश्चन 2, फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 4, रीड ईच स्टैंजा इन द पोएम टर्न बाय टर्न। ये सब आपको रीडिंग करना है स्टैंजा 1 by 1 4 के ग्रुप में। तो फर्स्ट स्टैंजा है, यहाँ पे देखो, इफ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, बी अ स्क्रब इन द वैली बट ही, द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील, बी अ बश इफ यू कांट बी अ ट्री। सेकंड स्टैंजा है, इफ यू कांट बी अ बश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक, इफ यू कांट बी अ मस्की then just be a bass, but the liveliest bass in the lake. Third stanza है, we can't all the captains, we have got to be crew, there's some things for all of us here, there is big work to do and there is lesser to do, and the task you must do is the near. Fourth stanza है, if you can't be a highway then just be a trail, if you can't be the sun be a star, if isn't by size that you win or you fail, be the best of the whatever you are. Question 3, find and write the pairs of rhyming word from the poem. पहली पेयर है हिल रील, सेकंड पेयर बीट ट्री, ग्रास बास, मेक लेक. Complete the following with appropriate word or phrases. Form the poem. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। देखो फर्स्ट वन हमारे लिए डन कर दिया है, सेकंड से हमें पुट करके कंप्लीट कर देना है। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है, सेकंड में इफ यू कांट बी अ ट्री बी अ बश, इफ यू कांट बी अ मस्की बी अ बास, इफ यू कांट बी अ कैप्टन यू कैन बी इन अ क्रू, इफ यू कांट बी अ हाईवे बी अ ट्रेल, इफ यू कांट बी द सन बी अ स्टार. क्वेश्चन 5 है, राइट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू है या फॉल्स है हमें राइट करने हैं। फर्स्ट है यहाँ पे, ऑल मस्ट बी कैप्टन्स ऑफ द टीम, आंसर फॉल्स. सेकेंड, अ बीट ऑफ ग्रास कैन मेक द हाईवे हैप्पियर, ट्रू. थर्ड वन, वी विन और फेल डिपेंडिंग अपॉन साइज और पोजिशन, आंसर फॉल्स. फोर वन है, अ स्क्रब इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द हिल, फॉल्स. 5 नंबर वन है, इफ यू वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट डोंट डू इट, फॉल्स. 6 वन है, वट एवर जॉब यू हैव डू योर बेस्ट, आंसर ट्रू. 6 नंबर क्वेश्चन, राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो। पोएम में जो एप्रिसिएशन है उनको हमें ये फिल कर लेना है. फर्स्ट वन है, द टाइटल ऑफ द पोएम इज, आंसर बी द बेस्ट. The poem is written by Douglas Malloch. Third one है, the poem has ... stanzas. इस stanza है ... line. Poem में 4 stanza है, हर एक stanza में 4 lines है. Fourth one है, the lines that rhyme in each stanza are first and second, third and fourth. Fifth one है, the poet compares big things with small things. Sixth one, ... is a repeated expression in the poem. If you can't be, ये क्या है, रिपीटेड एक्सप्रेशन है. सेवेंथ वन, द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज, बी द बेस्ट. 7 नंबर क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ... बाय जूलिया फ्लेचर. कैर्नी, लर्न इट अप, सेट इट टू अ ट्यून एंड एंजॉय सिंगिंग इट. यू मे आस्क योर टीचर टू हेल्प यू. तो ये आपको टीचर की हेल्प से कंप्लीट कर लेना है.